we have done addition, subtraction and multiplication of matrices, that is algebra of matrices. Now we will take some problems based on this topic. So that is exercise 3.2 of NCERT. First question, if A matrix is equal to this, B is this, C is this, find. So first is question number 1, solution, that is first part, A plus B. What is A matrix? 2, 4, 3, 2. What is B matrix? 1, 3, minus 2, 5. So this addition is defined. Why? Because both the matrices are of same order. First condition for addition is कि दोनों का जो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो ये डिफाइंड है, सेम ऑर्डर का है. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ इन द एडिशन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड. सो 2 + 1, 4 + 3, 3 ± 2, and this is 2 + 5. Because addition is defined as order of A is equal to order of B. You can remember this. So what is this? This is 3, 7, 1, 7. So that is first part. First part is addition of A and B, that is A plus B. So this is equal to, we have added, हमने corresponding elements जो first position का first से जो आपका A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है वो उसी में ऐड होगा, corresponding elements को ऐड किया and we got the sum. Next is A minus B, A minus B. Second part, A minus B. So again, 2, 4, 3, 2, minus 1, 3, minus 2, 5. So corresponding element को subtract करना है या क्या करना है, हमने पहले का नेगेटिव लेकर के -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. So this subtraction is defined, yes, because both are of same order. So this is corresponding element को 2 minus 1, 4 minus 3, 3 minus of minus 2, 2 minus 5. जो फर्स्ट पोजीशन का है उसको फर्स्ट के साथ हमने डिफरेंस किया, उसका सब्ट्रैक्ट किया. सेकंड A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम एलिमेंट. So 2 minus 1, 1, 1. This is 3 plus 2 is 5. Why it is 5? Because minus into minus becomes plus. So 3 plus 2 is 5. And this is minus 3. So we have subtracted B from A, difference of two matrices. And this is equal to 1, 1, 5 minus 3. In the fourth part, we are required to find out the product of these two, AB. Fourth part, AB means 2, 4, 3, 2 and B matrix 1, 3, minus 2, 5. So now first is order of this is 2/2, this is 2/2. Is the multiplication is defined? Yes. Why? आप लिख सकते हैं यहाँ पर multiplication is defined. Why it is defined? Because number of columns
number of columns of A, number of columns of A is equal to number of rows of B. देखिए, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है. सो इसके कॉलम पहले के 2 हैं, इसकी रो 2 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है. नाउ rows are multiplied with columns. So this is 2 into 1 plus 4 into minus 2. Then 2 into 3 plus 4 into 5. Then 3 into 1 plus 2 into minus 2. Then 3 into 3 plus 2 into 5. This row multiplied with this 2 into 1, 4. Then this row with second column 2 into 3 plus 4 into 5. So we are getting 2 minus 8, 6 plus 20, 3 minus 4, 9 plus 10. So this is equal to, we are getting minus 6, 26, minus 1 and 19. Again it is 2 by 2. So this is the product of these two matrices. Next is problem 7. Find x and y if x plus y is this and x minus y is this. In this problem it is given for us that sum of two matrices equal to this matrix and difference of these two is equal to this. So x plus y is equal to 7, 0, 2, 5. Call it as equation 1. And x minus y 3, 0, 0, 3. Call it as equation 2. Let this is equation 1 and this is equation 2. Now अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सी लेफ्ट साइड को बाय एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट्स, अगर लेफ्ट साइड को हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सम है वो x की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर y प्लस के साथ है और इस पे y माइनस के साथ है. सो on the left side x plus y plus x minus y is equal to 7025 plus 3003. So this sum is defined, yes, because both the matrices are of same order की हैं 2 by 2, इसलिए ये sum defined है. अब इसको x प्लस वाई लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया प्लस x माइनस वाई, और राइट साइड पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. 7 प्लस 3 फर्स्ट का फर्स्ट, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3. Now we can write it here. So this implies it is positive, it is negative. इक्वल है दोनों, कैंसल हो गया. x plus x 2x. 2x is equal to 10, 0, 2, 8. So this implies x is equal to, when we transpose this 2, जब उधर लेके जाएंगे ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So this is 10, 0, 2, 8. So this implies x is equal to 10 by 2, 0 by 2, 2 by 2, 8 by 2. Why? Because multiplication with scalar
हमने देखा है कि किसी स्केलर के साथ जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ. So it is 10 by 2, this is 0 by 2. So this implies x is equal to 10 by 2, 5 to the 10, 0 by 2, 0, 2 by 2, 1, this is 4. कैंसल कर देंगे इसको, 2 से 5 to the 10 ऐसे 5, इसको 2 से 2 1, इसको 2 से 4, and this is 0. So this is the value of x. But we are required to find out value of y also. So by putting this value in this equation or this, किसी भी एक में, either of the equation, जब ये वैल्यू हम भरेंगे y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. So from equation 1 we will substitute this value. x की जगह 5 0 1 4 plus y is equal to 7. This is 7, not 2. 7025. So this implies, now we can erase it. So this implies y is equal to, when we transpose this matrix from left to right, sign will change, minus 5014. So this implies y is equal to, again difference of two matrices, same order की है, corresponding element 7 minus 5, corresponding means a11 a11 a12 a12 a21 a21, 2 minus 1, 5 minus 4. So this is equal to 2011. So therefore this is the value of y, this is the value of x. So we have calculated both the matrices from the given equations. Now last problem. Assume that P, W and Y are matrices of order this, P cross K, N cross 3 and 3 cross K respectively. The restrictions on N, K, P, so that, ये MCQ प्रॉब्लम है, मल्टीपल चॉइस है, 4 चॉइसेस हमारे पास गिवन है, कौन सा चॉइस जो है वो राइट आंसर है, और गिवन कंडीशन है कि Py plus Wy will be defined. So Py plus Wy will be defined. This implies we can take y as common, is defined. This will be also defined. अगर ये defined है तो p plus w जो है sum of p and w will be defined. Sum of p plus, this implies p plus w is defined. ये defined होगा. और ये कब डिफाइंड होगा? दो मैट्रिसेस का सम कब डिफाइंड होता है? इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ P is equal to order of W. So this implies, what is the order of P? See from here, P cross K, P रो, नंबर ऑफ रोज P है, नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं, और ये W का जो ऑर्डर है सेकेंड 3 क्रॉस K. So this implies P cross K is the order of P and W is second n cross 3. It is n cross 3. N cross 3. So this implies P is n, K is equal to 3. कौन सा ऑप्शन है? A. Therefore A is the answer. So we have done few problems based on the
अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ एक प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं यहाँ पर।